हेलो गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। पता है आज बहुत लेट हो गए अपन, लेकिन कंसिस्टेंट है अपन। ठीक है, आई एम कंसिस्टेंट ब्रदर। आई एम बैक। लेट्स मचाइंग बोइंग वाइंग बोंग। सबसे पहले जाके थोड़ी आर्य बनाओ। इनफ। वो थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। वाटर, I'll drink some water. I guess I'll post an expedition at the Adventurers Guild. Leave it to me. All of it. Whatever it is. What exactly is it? I didn't quite catch your request. Which should I choose? चलो, let's go. Haven't you heard? There's a strange wanderer here. Which should I choose? What do you have? हे मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? क्या चाहिए भाई? और वो उधर से इधर तक मेरे पीछे पीछे आया। What the hell? Ad Astra Abyssath. हेलो राघव भाई, हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। राघव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसे हो? आज बहुत ज्यादा लेट आ गया ना मैं। आई नो बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट आई एम हियर। देखो भाई, even if I'm late, I am consistent, and that is what is important for me. By the way, आज अपने स्ट्रीम करने का 16वां दिन है, 16th डे भाई। नहीं सॉरी, स्ट्रीम नहीं, Genshin Impact का। I'd like to make something, I don't know what, why, but ये क्या है बे? Is this a good thing for Barbara or this? Hello दीपक कुमार भाई, हेलो, गुड मॉर्निंग दीपक कुमार भाई, गुड मॉर्निंग। HP 9%, okay, and what is this thing? Elemental mastery. So this thing is very important for our Barbara. Is there HP percentage है? Sleepy? No, sleepy नहीं। अरे अभी उठा मैं। How the hell am I sleepy? I woke up just now, like now, not now, like half an hour ago. 1:30 को उठा मैं। 1:30 को लेट इसलिए उठा क्योंकि ना मैं दोपहर को वीडियो एडिट करके डाल रहा था। मतलब वीडियो मैंने एडिट कर दी और मैंने डाल दी, मतलब एडिटेड वीडियो मैंने चैनल पे डाली, तो इसलिए मैं दोपहर तक जगा था ना। नहीं तो मैं हर रोज है ना स्ट्रीम करने के बाद, मतलब स्ट्रीम करने के बाद सुबह तक सो जाता हूँ मैं। एम्बर गुड फॉर बारबरा। अच्छा, गुड फॉर बारबरा। एम्बर गुड फॉर बारबरा, मुझे लगा एम्बर गुड फॉर बारबरा। मैं बोला है व्हाट, बट ऑनेस्टली नॉट वर्थ फोर्जिंग। ओके, रियली, एक्चुअली व्हाट एम आई यूजिंग फॉर बारबरा? व्हाट एम आई यूजिंग बारबरा के लिए? हम क्या यूज कर रहे हैं? अरे बारबरा, ये कौन सा नकली वेपन है रे? वो भी लेवल 1 का है क्या? मजाक चल रहा है क्या? अरे भाई साहब, चाइल्ड इज सॉरी, चैट इज like 1 minute delay. No, not 1 minute delay, it's like 30 seconds delay. वो automatically delay है। It is not, but why? Let us check this thing. अगर मैं इसको इनहैंस करता हूँ, इसको मैं इनहैंस नहीं, रिफाइन नहीं कर सकता। ये तो लेवल 1 का मटेरियल है। क्या गावत, मेरे को बोलना क्या था, मैं बोल क्या दिया। Base attack, crit rate. What is this thing then?
एलिमेंटल मास्टरी एंड बेस अटैक. सो ये तो रिफाइनमेंट इसे तो 5. अरे वाह वाह, ले 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 ले. ये निंगवांग के लिए सेट है ऑलरेडी. So I'm gonna take either this thing or this thing. What is this thing then? Energy recharge 8.5%. Elemental mastery 20%. I'll take this one. अपन ये लेगा. Hello रघुवीर भाई, welcome to the stream brother. कैसे हो? ये वाला ठीक है, because इसमें elemental mastery है. Causes a vaporize, electrocharge, frozen, hydro. और ऊपर से देखो इसका रिफाइनमेंट लेवल भी डायरेक्ट लेवल 5 है. अपॉन कॉजिंग अ वेपराइज्ड इलेक्ट्रोचार्ज, फ्रोजन और अ हाइड्रो इन फर्स्ट स्टेज, रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 40% फॉर 12 सेकेंड्स. मतलब इसके लिए मुझे एनिमो कैरेक्टर लेना पड़ेगा रे, और अपने पास तो अपन मेन में एनिमो यूज ही नहीं करते हैं. हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? बट लेट अस टेक इट बिकॉज ये बेटर है फिलहाल. ये वाले बुक से तो बेटर ही है ना, तो ले लेता हूँ मैं. अरे ये क्या है? ये इसका भी रिफाइनमेंट लेवल 5 है, रैंक 5. एनर्जी शावर. ईच एलिमेंटल ऑब और पार्टिकल कलेक्टेड रिस्टोर्स 2% HP. अरे इसको मैं HP जैसे ही ले रहा हूँ तो हाँ कंफ्यूज हो गया रे मैं. रुक 39 ये ले लेता हूँ. चल वैसे भी मेरी बार HP के लिए है. सो दिस थिंग इज गुड बिकॉज इसमें एनर्जी रिचार्ज भी है और अपने को अटैक के लिए तो चाहिए नहीं ना, इसलिए ले लो. वेपन सिलेक्शन. अच्छा वो तो ओके हो गया. तो इसका मैं जो रिफाइन करना है क्या? रिफाइन नहीं सॉरी रिफाइनरी. हाँ व्हाट एम आई सेइंग ब्रो? दिस थिंग इज ये क्या है भाई? ये चाहिए मेरे को. और लेवल 1 का मटेरियल लो को. और कैन आई अपग्रेड इट? आई कैन अपग्रेड इट. सो व्हाई वोंट आई? एक्चुअली देखो तो सही, मुझे 0 लोग दिखाई दे रहे हैं. मतलब ये खत्म हो गया मेरे पास लेवल 1 का मटेरियल इतना ही था. ठीक है, तो चैट में ऐसा लग रहा है 0 लोग हैं लेकिन एक्चुअली 4 लोग हैं. देखो सब लोग को मुझे एक बात बतानी है. बाय guys and grills, I'm gonna have to tell you something. Listen to me carefully. देखो अगर तुम कल ज्वाइन हुए, अगर तुमने कल देखी होगी तो तुम्हें पता होगा, नहीं तो फिर मैं अभी बताता है. इट डजंट मैटर रे. तो तुम्हें मतलब पता होना चाहिए ना. यू शुड नो एवरीथिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो मेरे 75 पिटी हो चुके हैं गानियों के बैनर पे. 75. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज 1600 जेम्स, मतलब प्रीमो जेम्स जमा करूंगा मैं, बिकॉज मैं 10 पुल कर रहा हूं. मैं सिंगल पुल नहीं कर रहा हूं. जस्ट मुझे ऐसा ही करना, मतलब है ना, एक मेरे अंदर जो ये होता है ना लिपी चैट है. अच्छा मतलब तुम लोग को सोने को आ रहा है क्या? अरे रे आई एम रियली, आज तुम लोग को मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. स्लीपी चैट मतलब क्या? बहुत ज्यादा स्लो पब्लिक लिख रही है, या कोई लिख रहा ही नहीं है, या सिर्फ सब लोग देख रहे हैं. इवन इफ यू आर नॉट टाइपिंग, अगर तुम देख भी रहे हो देन इट इज अ वेरी गुड, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात. तो मैं बोल ये रहा था, वो सुकृति वेलकम टू द स्ट्रीम. न्यू कोड क्लेम किया क्या? अरे भाई रघुवीर भाई आपने मतलब भेजा था, किसने भेजा था? वो डिस्कॉर्ड पे भेजा था, मैं देखा. लेकिन मैंने कभी देखा, मैंने 130 को देखा और मैंने उधर देखा कि वो एक्सपायर होने वाला है 4 तारीख को और अभी तो 5 तारीख है. सो आई अपैरेंटली लॉस्ट इट. मतलब मैंने ट्राई नहीं किया. वो हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, उसका वैलिडिटी खत्म हो गया रहेगा. क्योंकि वो 6:30 बजे भेजा था और मैं सो गया था, इसलिए मैंने मिस कर दिया. अरे यार मैं ये बोल रहा था कि देखो मेरे 75 पिटी हो गए और अभी मेरे सॉफ्ट पिटी शुरू हो जाएंगे, बट मुझे 10 पुल्स करने हैं. 10 पुल करूंगा मैं, सीधा 10 पुल. अभी 1-2 पुल भी नहीं कर रहा. अभी मेरे पास पता है मुझे प्रीमियम्स कम है, लेकिन आई एम गोइंग टू कलेक्ट इट और मैं 10 पुल करने वाला हूं. ठीक है, तो
इसलिए मैं पुल नहीं करूंगा, ठीक है। दैट इज द ओनली रीजन कि मैं एक एक सिंगल पुल नहीं कर रहा, ठीक है। बस आए मतलब मुझे लगा कि ये बताना चाहिए तो मैंने बता दिया, ठीक है। अरे रे रे ओ चैट स्लीपी तो भाग गई, चैट भाग गई, चैट भाग गई, चैट भाग गई। रुको रुको, न्यू कोड क्लेम किया गया, डिस्कॉर्ड पे है। फेलिक्स रिडीम कोड एक्सपायर हो जाएगा, क्लेम कोड फॉर 300 प्रीमो। यस मैंने डाल दिया। दैट इज इन यूएस टाइम, नो टाइम है। जल्दी 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 जल्दी। बाबा Take your pick. इधर किधर जा रहा हूँ मैं? मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था। रुको 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 रुको, प्लीज 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 बता दोगे क्या? चैट में बता दो ना, चैट में बता दो ना मेरे को, या फिर मैं डिस्कॉर्ड ओपन कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। मेरे को ऐसा देख देख के बार बार करना पड़ेगा। क्या था? यस सुगरुति ने डाला है। किधर डाला है? अच्छा उधर डिस्कॉर्ड में डाला है ना, मैं डिस्कॉर्ड से कॉपी करना पड़ेगा। जल्दी क्लेम करो, ट्राई तो करो। ठीक है कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड में देखता हूँ मैं। डिस्कॉर्ड ओपन हो जा भाई। अरे ये तो बहुत बड़ा AB7VJC। अरे भाई AB7VJC9EGDAZ खत्म। मैं तो अरे यार ये क्या होगा? कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट कैसे करूं भाई? ये तो फोटो में है ना। अरे वो कोड फोटो में है ना। अच्छा यहाँ पर ऊपर है, ठीक है। कॉपी पेस्ट। मजा आ गया। एक और बार। सॉरी अगर मैंने कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला दिया या हंस दिया या व्हाटएवर। खुशी हो रही है ना, खुशी। वाह एक नंबर। थैंक यू यार सुकृति, थैंक यू अपनी कम्युनिटी, थैंक यू राघव भाई, थैंक यू रघुवीर, सब एक नंबर यार। ऑल एवरीबॉडी इज ओपी। बिफोर कमिंग इनटू दिस स्ट्रीमिंग मुझे लगता था कि माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी है ना, उससे ओपीएस्ट कम्युनिटी कौन सी भी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मतलब माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी ओपी है, लेकिन एवरी कम्युनिटी इज ओपी यार। एवरी कम्युनिटी इज ओपी, एवरी। हाँ 100 प्रीमो जब ले दे आने दे। The dear traveler, here's your reward for redeeming the code. अरे थैंक यू यार, थैंक यू सबको, थैंक यू सबको थैंक यू सबको। कॉपी पेस्ट करो। अरे कॉपी पेस्ट कर लो, नहीं उसके ऊपर। हाँ हो गया सुकृति कर दिया आपने। थैंक गॉड, थैंक यू एवरीबॉडी। अरे किसका फ्रेंड रिक्वेस्ट आया? किसने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा रे? क्रिम्सन। अरे क्रिम्सन, हाँ वो कल वाला। आई रिमेम्बर एवरी वन ऑफ यू। बाय द वे 45 विशेस ही है, सॉरी विशेस फ्रेंड्स बना सकता हूँ मैं। उसके बाद फिर ना मेरे को हकल देना पड़ेगा कुछ जिनके साथ मैं नहीं खेलता। लेकिन 45 व्हाट टाइम है उसके लिए? व्हाट टाइम बट दिस थिंग इज ये एक चीज है जो कभी हकलने वाला नहीं हूं मैं। वो है अपने जो ओल्ड पब्लिक है ना, उनको कभी नहीं हकलेंगे अपन। नहीं हकलेंगा नहीं, क्या बोलते उसको? डिफीट एवरी टाइप ऑफ हाइपो मी अपने को कलेक्ट करना है बस। व्हाट इज दिस? ओके देखो अगर 20 जेम्स मिल रहा है, ओके 100 टाइम्स करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। 5 रीजनल स्पेशलिटीज इन अनदर प्लेयर्स वर्ल्ड।
मैं तो अनदर प्लेयर के वर्ल्ड में कभी गया ही नहीं, मेरे को जाके ये करना पड़ेगा। और ये रीजनल स्पेशलिटीज क्या है वो तो तुम लोग मेरे को बता दोगे बाद में। मतलब क्या, व्हाट इज द रीजनल स्पेशलिटीज? यस, अब पुल करो गानियो कम होम। यस। अरे अरे सुकृति, अरे रुको यार, अरे रुको यार, देखो 5530 है, मेरे को 10 पुल करने हैं यार, प्लीज यार, प्लीज यार, स्वामजा करो, स्वामजा करो। आई नो सुकृति मिल जाए, सुकृति मिल जाएगी। अरे सॉरी सॉरी, आवेगी क्या? आई नो गानियो मिल जाएगी, लेकिन 10 पुल करने मेरे मतलब देखना, एक मिथ है ना मेरे दिमाग में, जो मिथ है वो मुझे वो मतलब वो बस्ट करनी है कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। मिथ बस्ट उसको बोलते हैं। सॉरी। न्यू मेल वैगर, हेलो वैगर, वैगनर, क्या नाम है तेरा? वैगनर बोलूंगा मैं तेरे को। क्लेम करो फॉर कमीशंस। यो, अरे आरव गोयल, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। बाय द वे सब लोग को एक बात बतानी कि अपने को, एवरीबॉडी सुनो, आज अपना 16वां दिन है रे गेंशिन इम्पैक्ट खेलने का, वो भी बैक टू बैक। आई नो। अरे रुक जा यार, बात करने दे मेरे को नोएल। हाँ, आई नो कि ये जो 16वां दिन है, इनमें भाई बहुत ऐसा टाइम है कि मैंने जल्दी स्ट्रीम करी है, बहुत लेट भी स्ट्रीम करी है, बट हमने करी है, हमने मतलब 16वां दिन पे पहुंच चुके हैं अपन। अभी मुझे 30 दिन पे पहुंचना है, मतलब बैक टू बैक 30 डेज स्ट्रीम। मजा आएगा, मजा। दैट इज द ओनली रीजन मैं ना कितना भी लेट हो जाए स्ट्रीम करता हूँ रे, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस कंसिस्टेंट करना रे, हमको कंसिस्टेंट करना है। बाकी ओके, बट 10 दिन में हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, अरे इजीली हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। दिखाता हूँ कैसे, देखो आई शो यू हाउ। 10 दिन बहुत है रे, इनफ है। और 10 दिन भी नहीं, मैं तो भाई देखो, तुम कर लूंगा, मैं कर लूंगा, डोंट वरी। देखो 40 ये 60 यहाँ से मिल गए, ठीक है, यहाँ से 30, यहाँ से कुछ नहीं। अरे यार उनको मारने का है, शीट शी। ठीक है, ये है, यहाँ से भी मिल जाएंगे, टेस्ट भी ओपन करने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी कितना है देखो, अभी है, अभी 100 है, 100 है, सॉरी 530 है, ठीक है। ऊपर से उधर थोड़े थोड़े मिल रहे हैं। सेकेंडली यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, यहाँ पे 100 है। बस मुझे, मैंने सुना है कि ये वाला जो ये होता है ना, हाँ, हीलिंग इफेक्टिवनेस, ये सारे मुझे बारबरा को देने हैं, सारे जितने मेरे को, सारे के छोड़ो। क्लियर डोमेन ऑफ ब्लेसिंग आर्टिफैक्ट, अच्छा ये करना पड़ेगा। ओके, ये हो जाएगा। इन दोनों हाइपोथेसिस को मुझे रियल लाइफ में, सॉरी रियल लाइफ नहीं, अरे सिंगल प्लेयर मोड में मारने का, ये भी हो जाएगा। असेंड 3 वेपन टू फेज 2, ये हो जाएगा। एन्चेंट 8 आर्टिफैक्ट टू लेवल 8, ओके ये भी हो जाएगा। देखो ये सब हो जाएगा ना, तो मेरे को 100 प्रीमोजेम से इधर से मिल जाएगा। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। इन्वेस्टिगेट द फितुई के पास चलो, पट्टू लोग के पास चलो। 160 ये है रे मेरे पास, मतलब फुल हो चुके ले। एक सेकंड, उधर जाने से पहले थोड़ा इधर जाता हूँ मैं, थोड़ा कुंजुम सा, थोड़ा एकदम लिमिटेड। इधर जाता हूँ मैं थोड़ा सा, और है ना ये कर लेता हूँ, मतलब ये तो माइन ये कर लेता हूँ, स्टोन्स माइन कर लेता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ ओए, ये आप भी स्पॉन हुआ क्या? ये जो ब्लू कलर का है, क्योंकि मैंने अभी जाते हुए देखा नहीं ऊपर, या फिर मेरे को वापस वो रिप्ले देखना पड़ेगा। जो रुक जा, नहीं, वो ऑलरेडी था, वही मैंने देखा ही नहीं। अरे नीचे नहीं गिरना था नोएल।
बस हो गया। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट ये करना था मेरे को, इसलिए चलो अब चलते हैं फटुई के पास। फटुई, आई एम कमिंग। अरे हाँ, बारबरा के आर्टिफैक्ट को मुझे अपग्रेड करना है, हीलिंग बोनस है ना उसके ऊपर, वो आर्टिफैक्ट अपग्रेड करता हूँ मैं। और बारबरा बारबरा बारबरा, देखो सारे आर्टिफैक्ट लेवल 4 के हैं, बस थिंग इज कि इट इज नॉट मैक्स्ड हाइड्रो डैमेज। नहीं नहीं नहीं, हीलिंग बोनस ये वाला है क्या? ये वाला क्या है? हीलिंग बोनस किधर है? ये वाला है, ठीक है, इसको मेरे को याद रखना है। यहाँ पे ये क्या है? क्रिट डैमेज 8.4%। नाइस। HP 6.3%। अभी मैं कंफ्यूज हो गया कि HP लेना चाहिए कि हीलिंग डैमेज लेना चाहिए। हीलिंग बोनस तो HP 6.3, हीलिंग बोनस 4.8। हाँ, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तब तक मैं हाइड्रो डैमेज बोनस बढ़ा देता हूँ, इनहैंस कर लेते हैं इसको। अरे हाँ, ये तो मेरे को उसी में से मिला था ना। रुक 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 रुक, इसका 2 पीस सेट में अटैक बढ़ जाएगा। अच्छा, ये अटैक वाला है। ग्लैड क्या? ग्लैडिएटर्स। अच्छा ग्लैडिएटर, रुको जरा, और ग्लैडिएटर किधर है? ये वाला मेरे को मिला नहीं है, यहाँ पर मिला होगा। ग्लैडिएटर, ग्लैडिएटर इज ग्लैडिएटर, वेयर आर यू? अबे एक ही मेरे पास ग्लैडिएटर है भाई साहब, मजाक चल रहा है क्या? और वही वो एक ही वही है, वो ही है। क्या बोल रहा हूँ मैं? इसको मैंने लॉक नहीं किया, ठीक है, अभी कर देता हूँ। आप कचिंग यूज करोगे ना? जिंगशा, अरे हाँ यूज करूंगा, यूज करूंगा। देखो एट सम पॉइंट मेरे को शिंचा यूज करना चाहिए मेरे को, बिकॉज मेरा मेन एम है ना, मेरा मेन एम हीलिंग भी मेरा मेन एम नहीं है बारबरा के लिए। बारबरा के लिए ना एक्चुअली मेरे को वो पानी फ्रीज करती है ना, तो वो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो फिर वो जिंगचाओ इज बेटर उस मामले में कि वो पानी से पब्लिक को मारेगा। तो मुझे जिंगचाओ के लिए क्या करना चाहिए? उसको कैसे बनाऊं मैं? मतलब वो कैरेक्टर कैसा है? डैमेज डीलर है या फिर इसको अपग्रेड कर लो। HP मिल गया, नाइस नाइस नाइस। अरे वैभव भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर, हाउ आर यू ब्रदर? अरे आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हारा नाम थोड़ा सा लेट लिया रहेगा, तो एकदम कुंजुम कुंजुम सा। लेवल 9 22, लेवल 10 पे कर देते। यू ही बस। क्रिट रेट भी, अरे 2 HP है, देख यहाँ पे भी HP और यहाँ पे भी HP है। नाइस। और एनर्जी रिचार्ज, नाइस 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 नाइस। अरे 10 से बोलते बोलते मैं 11 कर दिया। अरे कोई बात नहीं। जिंगचाओ में बहुत सारे एनर्जी रिचार्ज डाल दो, अच्छा रहता है। ओके, जिंगचाओ इज बेटर एनर्जी रिचार्ज के लिए, ठीक है चलेगा। ओके, एक्चुअली मेरे को क्या करना है पता है, मैं बताता हूँ रे। देखो सबसे पहले मेरे को ये करना है कि सारे जो 4 स्टार के आर्टिफैक्ट है ना, उनको मेरे को लॉक करने गए। लॉक कर दिया जाए।
ये वाला तो कितना खूबसूरत दिख रहा है रे, भले इसका स्टैट्स मेरे को नहीं पता, मतलब दिख रहा है, पता नहीं कैसे बोल रहा हूँ मैं, दिख रहा है मेरे को, लेकिन दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये। ये वाला बंद कर दो, ब्लॉक, ब्लॉक कर दो, इसको भी ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, इसको भी ब्लॉक करो रे, इसको भी, इसको, इसको, यू, यू, ठीक है, हो गए सारे, खत्म भी हो गए पोस्टर। अरे रे रे, बस इतनी थे। जिंचा, राइट 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 राइट, वेयर इज इट? हेलो भाई, एक फ्री वाला इसको कर सकता हूँ मैं, एक फ्री वाला कर लेते हैं, रुको जरा, फ्री वाला करने से पहले देखता हूँ कि परमानेंट विश में, परमानेंट विश ही होता है ना वो, और इसको थोड़ा सा ग्लिच हो गया, पूरा ब्लैक है, मतलब अब तक लोड नहीं हुआ, क्योंकि भाई एकदम फटक से लोड हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई तो ग्लिच है, थोड़ी देर के बाद वापस ट्राई करेंगे। हिस्ट्री में कुछ ग्लिच आ रहा है, इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, वाई? बिकॉज अपने को वो चाहिए, ये है। वैसे वो 265 है, थोड़े से एक दो ही यूज कर लेता हूँ। 15, 61 कर लेते, चल 60 कर लेते। ओके नाइस, आओ आओ, अब अपन ये यूज करेंगे। अरे रे 175 और ये 1000 है, चलता ही रे, चलता ही रे, असेंड करो। Were it not for my capability, the cause that so inspires me would remain confined to the pages that extol its virtues. Okay, I don't understand what you said, but ये जो डायलॉग्स है ना, ये मेरे को सुनने को बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर असेंडिंग, कोई भी कैरेक्टर को असेंड करते ना, फिर वो डायलॉग बोलता है ना, सुपर सुपर लगता है जी, सुपर लगता है। इसको ले लो जी, क्लाइम, लेट अस गो, स्पिन। एक इसके लिए मेरे Give को it to me, all of it, whatever it is. What exactly is it? यहाँ पर चल के गॉड लेडी के पास जाओ। इवन दो वन स्पिन है, अपन गॉड लेडी के पास जाएंगे। इवन दो नया नया जिंगचाओ मिला है क्या? एग्जैक्टली कल ही मिला है, एकदम कोरा कोरा है, एकदम कोरा कोरा का कोरा कोरा, हाँ नया नया मिला है, नया नया एकदम नया। अभी से मैंने बैग से निकाले, अभी बैग से निकाले ले। By the way, welcome to the stream, Ice the Simp. I know you, I know you. सुमड़ी में हल्लू 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 हल्लू, फिर जा। एक स्पिन कर लेते हैं। ये कुछ तो दे दो, नहीं दिया तभी भी चलेगा, चलेगा चलो। ओके ओके, चलता है। टैसल, ब्लैक टैसल मिली मेरे को, ब्लैक टैसल। ये तो मेरे पास बहुत है, मतलब मैं सपोज टू बाय, आई कैन नॉट बाय एनीथिंग। लेट अस गो बैक टू इसके यहाँ पे। ये मुझे करना था कि शिंचा करिया, देखो इसको मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा। चल लॉन्ग स्वॉर्ड यूज करता है तो इसको वेपन में दूंगा, इनहेंस नहीं, इस फालतू को इसको। और ये वेपन ऐसा लग रहा है इसके लिए ही बना है, एनर्जी रिचार्ज, राइट? एनर्जी रिचार्ज, अरे भाई साहब। और वैसे भी उसको किसने लेके भी नहीं रखा है। वाह 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 वाह। विंडफॉल, crit hits have a 60% chance to generate a small amount of elemental particle which will
रीजनरेट सॉरी अच्छा रीजनरेट 6 एनर्जी फॉर द कैरेक्टर कैन ओनली अगर ओनली once every 12 seconds. ओके ले लो। मुझे लगता है आज ही मुझे गानियों मिली। गुड फॉर यू, गुड फॉर यू, अच्छी बात। आई एम हैप्पी फॉर यू। इसको स्विच करो, इनहैंस, इसको इनहैंस करना चाहिए क्या, करना चाहिए क्या? एनर्जी रिचार्ज इसके अंदर 30% बेस अटैक है, इसको इनहैंस कर दो क्या? ये सही है बट बेस्ट स्वॉर्ड सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड, सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड, सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड वही चाहिए क्या जो मेरे को वो बंदे से क्राफ्ट करनी पड़ेगी, राइट? वैगनर के पास चलो। हाँ भाई बार बार मैं इधर आ रहा हूँ, Whenever you need me. टेलीपोर्ट करके वैगनर के पास जा रहा हूँ। वैगनर आ रहा हूँ मैं, वैगनर। वैगनर बूम बैम बैव। Someone needs a... हेलो, सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड डू यू सेल? मैंने देखा था, शायद देखा था या नहीं देखा था, और जस्ट मेरे दिमाग में है वो। प्रोटोटाइप रैंक और आयरन स्टिंग। व्हाट इज दिस टू? एलिमेंटल मास्टरी 36, healing elemental damage, increase all damage by 6%. all damage मतलब all parties damage की all ठीक है, by 6% for 6 seconds, max to 2 stacks. okay, can only अगर once every 1 second। अरे चलेगा, 1 second is very good, very good, very good। रैंकोर का क्या है? फिजिकल डैमेज बोनस। ओके, तो ये वाला मेरे को लगता है अपने बेनेट के लिए अच्छा है। अगर मुझे, अगर ओनली इफ अगर गाचा स्वॉर्ड है पुल पर ही मिलेगा। अच्छा स्वॉर्ड है लगता है, अच्छा बोल, इफ यू वांट टू से अच्छा स्वॉर्ड है पुल पर ही मिलेगा, पुल पर ही मिलेगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब ये पढ़ ही लेते हैं। ऑन नॉर्मल हिट एंड नॉर्मल और चार्ज अटैक, increase attack and defense by 4% for 6 seconds, max to 4 stack. This effect can only अगर once every 0.3। अरे 0.3 इतने छोटे छोटे। बाय द वे मैं कभी चार्ज अटैक करता ही नहीं, नॉर्मल अटैक मैं ऐसे ही करता हूँ, लेकिन मुझे चार्ज करना चाहिए ऐसे, बूम बैम। ओ भाई, चाकरी बोलते, चाकरी। नाइस नाइस। अरे ये क्या, गोल गोल घुमाते घुमाते मेरे को वो भी मिल गया, फ्रेजाइल, वो जो वुड, फ्रेजाइल वुड, ये क्या बोल रहा हूँ मैं, नहीं जो वो जो वुड था, वो जो भी वुड था। नहीं, गाचा मतलब जो विश करके मिलता है। अच्छा, गाचा मतलब जो विश करके मिलता है। ओके ओके ओके, मेरे को नहीं पता था, तो ओके समझ गया मैं, अभी मेरे को पता चल गया। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जापानीज वर्ड है। अच्छा, यू ऑलरेडी हैव दिस वर्ड, प्रोटोटाइप रैंकर। ओके, डू आई हैव इट? तो मैं उस उधर से अगर मेरे को चाहिए तो मैं उधर से उसका ये ले सकता हूँ, रिफाइन करने के लिए ले सकता हूँ अगर मुझे चाहिए तो। चलो यार, मैं तीसरी बार आ गया यहाँ पे, ये आगे कंटिन्यू करते हैं। तू हवे में रुक जा, बेनेट तेरे पास स्वॉर्ड कौन सा है? अरे हाँ, ये मेरे पास ऑलरेडी है, फिजिकल डैमेज। तो अगर मैं इसको इनहेंस करने के टाइम रिफाइन करना होगा, तो रिफाइन करने के बाद क्या होगा, 1 हिट। इसके बाद वाला नेक्स्ट रैंक में नॉर्मल और चार्ज अटैक इंक्रीजेस डिफेंस बाय 5%। ओके, 4% है, 5% हो जाएगा बस। चलो लेट इस गो अप। अरे इधर मुझे वो पट्टू, अरे यहाँ पर वो ये करना है, थोड़ा सा जूम करो। बूम, अरे आउट नहीं इन, इधर है ना, ये स्टार मार्क कर दे कि यहाँ पर ये ना ये है, ये है नहीं,
पजल है, तो वो सॉल्व कैसे, मतलब पजल है ना तो एकदम कुछ सर्टन ऑर्डर से करना है या कैसे करना है, अभी देख लेता हूँ। अगर कुछ निंगवांग ले लो। हेलो, एंड व्हाट इज योर ऑर्डर? ऐसे है क्या? ये जो ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। नहीं, कुछ तो इनका कुछ तो है। मुझे लगा ये जो गोल ऐसा देखो दिख रहा है, ये जो फ्लावर ऐसा गोल घूम के ऐसा उधर एंड हो रहा है, वो एकदम मेरा फालतू लॉजिक था। लेट अस लीव इट, इसको बाद में देखेंगे। मैंने मार्क तो कर दिया है। मेरे को जाने का किधर है रे? हैं? इधर जाने का मेरे को? Swift and merciful. I'll protect us. अच्छा, ये लोग ने आवाज कर दिया। Wonderful. ये लोग आवाज नहीं करते तो मेरे को इधर पता थोड़ी चलता कि यहाँ पर एक इधर कोई है ही नहीं है। इधर एनिमो स्वॉर्ड बोल रहा हूँ, एनिमो बंदा लेना पड़ेगा। यू ऑलरेडी हैव दैट, ओके। एनिमो तो आजा निंगवांग। Just what will we come across this? निंगवांग भाई तेरे को, अबे नहीं सॉरी, फटाफट 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 फटाफट। कुछ तो एक ऑर्डर है क्या? पर्टिकुलर ऑर्डर है क्या? ऑर्डर ऑर्डर। यहाँ पर एक चेस्ट है, फायर कैरेक्टर लेना पड़ेगा यार। मिस नहीं करना है रे मेरे को, मिस नहीं करना है रे मेरे को। अरे यार, बारबरा रुक जा, एम्बर आजा। अरे एम्बर नहीं, चल इसको Next देखते हैं। time, be sure to make a ये मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। व्हाट इज योर पावर? incinerate. अरे वो लोग ने उसको कैसे मार दिया? इसको मारने का था। Yeah. हाँ हो गया हो गया हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो अच्छी है। Unexpected, but welcome. क्या आर्टिफैक्ट मिल गया यहाँ से? ये करना कैसे है मेरे को देखना पड़ेगा। ऊपर चलो। एनिमी स्पॉन होने से पहले सी ऑन मैप, सी ऑन मैप येलो पॉइंट है। बाबरा अच्छा बाबा, Wish me luck. विश मी लक। अरे ये नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एंड देन 1, बिकॉज मुझे हील करना है थोड़ा। ये देखिए देखिए देखिए, येलो पॉइंट इसके अंदर जा रहा है, देख रहे हो? यहाँ पर कुछ एग्जामिन का आ रहा है, एग्जामिन। There are so many talismans here. अच्छा उसमें And से some stacks of blank paper too. ओके, What are they for? मैं आपके वर्ल्ड में आ जाऊं? नहीं, नो। अरे रुक जा भाई, अभी तो मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ ना। ये अभी कैसे आ जाएगा भाई तू? मतलब अभी क्यों आएगा तू? It looks like they're copying the pattern of the talisman. I haven't seen this pattern before. But where? QI वो जो, अबे क्यों हानि? अरे क्या है भाई हानिकारक? अरे रुक जा भाई, अरे 3 बार रिक्वेस्ट भेजिया। अरे रुको भाई, सबर करो। Oh, Paimon knows. It looks just like the sigil of permission the child gave you. Yes, oh right, I don't know. But how did a relic of your death die end up in the hands of someone like child? Suspicious. Suspicious. It's not just a relic. Oh, that's
right. Cloud Retainer said that when the Lord of Geo created the Sigil of Permission, it wasn't to be used as some old relic. Okay. Talismans like that were once used in the Archon War to channel divine powers. Maybe the Fatui are copying the Sigil of Permission in hopes of achieving a similar effect. Being able to channel divine power in battle? Whew, that sounds pretty dangerous. Seems seems the Fatui are different, defining up to something. And the plot thickens. We'll need to keep an eye on Child, that's for sure. Yes. Alright, that's enough sticking around here. We gotta go meet up with Zhongli soon. Okay. The last stop on our rite of parting preparations tour is Dihua Marsh. Okay. Let's go! Paimon hates being late. Paimon hates being late. Really? Are you kidding me? By the way, मुझे जोंगली से मिलना तो है, वो तो बात अलग है. अब पिछली बार जब मैं इधर आया था मेरे को उन मोटे लोगों को मारना था. अभी मैंने सीधा उनको इग्नोर ही कर दिया भाई. ये कैसा मजाक है भाई साहब. वो लोग है ही नहीं इधर. और ये जो पैटर्न है ये क्या है? मतलब ये जो मेरे को क्या लगा पता है? मेरे को लगा ये है ना, ये जो है ना, ये छोटी सी चीज है ना, ये दूर से मेरे को लगा को भाई ये प्रेशियस चेस्ट पड़ी है क्या? ये कैसे करना है? नीचे वाला फिर ऊपर वाला? एक बार ट्राई करके देखते हैं, मजा आ जाएगा. भागो जल्दी ट्रैवलर जल्दी. टाइम नहीं है. अरे वो बंद हो गया. आवाज आया मेरे को. डी हुआ मार्च पे चलो भाई, विदाउट डूइंग एनी टाइम पास. क्या? ये क्या लिखा है? समझा नहीं मेरे को. सुकृति, व्हाट हैव यू रोट? हेलो, तू जिंदा हो जाएगा? आजा, तू जिंदा होता है? ठीक है, हो जा. जी ले अपनी जिंदगी. मेरे पास टाइम नहीं है. अरे देवा. ओ भाई, उसकी मिसाइल कैसे आ रही थी? ओ भाई साहब. फटुई. अरे ये क्या है? फटुई के है? अरे भाई साहब, वो गेट खोल के डायरेक्ट यो पर जाना पड़ेगा. गेट खोल के सुकृति रोट फटुई पर अलग स्पेलिंग में. अच्छा, फटुई. जोंगली भाई, तू मेरे वर्ल्ड में कब आएगा? I myself only arrived moments ago. Okay, that is very good of you. I like the way you speak. You speak like gods. Who are you? Did you enjoy your visit to the Jade Chamber? I love it. Ningguang gave me nothing to eat. It was so big and pretty and expensive. Paimon's never seen such a fancy place before. Okay. Indeed. It's second to none in all of Liyue. Second to none. So what is the first one? Then you met with Ningguang, I trust? What Okay. did you talk about with her? Second to none. समझा नहीं मेरे को. She's super rich and so generous. Paimon thinks she's very friendly. Business people are always friendly when it suits their interests. Yeah, her take on Ningguang is quite different from Paimon's. She thinks that even the tactless Yuheng is more trustworthy than her. Oh. So you also met with Keqing then? What did she have to say? She said the time of the Adepti has long passed. If even the Liyue Qixing don't want to face that truth, then what future is there for Liyue? No respect for the divine. No respect for the divine. और इसके कान में एक जगह पे बाली है भाई साहब. क्या स्टाइल है इसकी. आहा. Indeed, contrary to the ever-bold Keqing, Ningguang is more of a businesswoman at heart. Though they are both members of the Qixing. Okay. Cheesing. Okay.
Although she's friendly, there's no way of clearly discerning her true intentions. सेकेंड टू नन मतलब कोई और चीज उसका मुकाबला ना कर पाए। अच्छा, उसका मतलब ऐसे होता है, मुझे लगा सेकेंड टू नन। ओके ओके ओके, थैंक यू ब्रदर। बाय द वे मेरे को इधर ये दिख रहा है, ये मैंने किया है क्या? हाँ ये मैंने कर रखा है, देखो थोड़ा सा लाइट हो रहा है, मतलब हाँ मैंने कर रखा है। काम से काम उसमें जोंगली बोलना तो वो ही चाहता था। हाँ, कम से कम उसमें जोंगली बोलना तो वही चाहता था। अरे हाँ समझ, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। निंगवांग इज, अरे वो तो बोलेगा ही ना, निंगवांग उसकी आइटम है ना, ऐसा लगा। मैंने सुने लाई नहीं, फोटो देखे लाई फुल एकदम। निंगवांग इज हाईलाइट। Yes, she has only relied on herself to rise to her current position. No ordinary person could ever achieve that. चाइल्ड के भी एक ही कान में इयरिंग है। हाँ वही तो। It's said that she's the one behind the constant expansion of the Jade Chamber. It's the second most important thing to her. Even if she ever gave up the position of Tianquan, she would never give up the Jade Chamber. चाइल्ड है ना, इसको कॉपी कर रहा है लग रहा है The Jade Chamber is only second. जोंगली को। What's the most important thing to her then? Why, Mora, of course. Mora is important to her. I thought Zhongli is more important to her. Makes sense. All Ningguang talked about was the Fatui this and the Fatui that. She said that after Rex Lapis was murdered, the Fatui have constantly been trying to sink their fingers into Liyue, and that they aren't to be trusted. Exactly. That is how the Fatui have always been. It doesn't surprise me in the least. And now they are trying to reproduce the sigil of permission. No matter what they may be planning, you must be careful when dealing with the Fatui. Always be on your guard. Of course. Thank you for your. अरे उधर देखो हिलीचल्स है. Thank you for your concern. So, is there anything we need to get for the rite of parting in Dihua Marsh? निंगवांग जोंगली से क्लोज नहीं है, लॉल। बाद में पता चलेगा। ओके, लेकिन मैंने फोटो देखी कि मस्त एकदम हाँ, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, डीलुक और जीन का है ना, जीन क्यों बोल रहा हूँ मैं, डीलुक और जीन के फोटो मैंने ऐसा सुने ला है, अफवाह फैली ली है बाजार में कि अफेयर चल रही है इन दोनों का। Yes, as a matter of fact there is. Today we'll be gathering wild glaze lilies. Okay, glaze lilies, okay. Glaze lilies? Well, why did we come all the way out here? Doesn't the garden in Yujing Terrace have some? Even Qingsa Village has glaze lilies. Oh, right! Paimon remembers that Madame Ping is always tending to flowers. Maybe we could ask her. No. Those lilies have all been gardened by people. They won't do it all. Okay. Dihua Marsh used to be full of glaze lilies. It is a sort of joyful flower that listens to human song. Before the Archon War, Dihua Marsh was all dry land and fertile soil. But the war caused landslides, and the land was flooded, turning it into the marsh you see now. Nearly all the glaze lilies were wiped out. Of course, there are some kinds of flowers that have been preserved and gardened by people in the city. But very few people know that glaze lilies may still be found in the wild. फोटोज को शिपर क्या शिपर्स क्या शिपर्स बनाते हैं, लॉल। शिपर्स क्या होता है? फर्नेट्स ऑफिशियल नहीं है। अच्छा ओके, ओह अच्छा, मतलब समझ गया। Wild glaze lilies have the strongest fragrance. If we want to follow the true tradition of the rite of parting, we must grind up the wild lilies and place the powder in a censer of everlasting incense. अच्छा, स्पॉयलर्स, डीलुक जीन का सीनियर था, वो भी पहले नाइट ऑफ अमोनियस था। अच्छा, दैट, इसलिए वो सिर्फ एक्टिंग ग्रैंड मास्टर है, राइट? ग्रैंड मास्टर एक्टिंग वही ना, ग्रैंड मास्टर ना, एक्टिंग नाइट ऑफ अमोनियस, वो एक्टिंग ये है, मतलब शी इज नॉट
उसको उसके हाथ में पूरी पावर है नहीं अभी तक। छोड़ो यार, आगे बढ़ते But I'll बढ़ते। need your assistance in मेरे को gathering समझ these बोलने नहीं हो flowers. रहा है, लेकिन मतलब मैं कैसे बोलूँ मैं? You mean you need to pick them up? अरे भाई। No, I need you to sing to them. Singing to the flowers will make them more fragrant. अरे भाई साहब, एग्जैक्टली जोंगली तू भगवान है भाई, मतलब सॉरी रेक्स लैपिस है, ड्रैगन है, और तू इधर फ्लावर का गाने बोलने को आया है भाई साहब। यही तो चाहिए भाई, यही तो चाहिए था मेरे को। So how good is your singing? मैं सिंगिंग एग्जैक्टली लाइक यू पाइमन। I'm a pro. Just step by. Really? Why doesn't Paimon believe you? I don't know why We'll Paimon only doesn't know believe once she me. starts singing. Okay. चलो अभी गाना। Search for wild glaze lilies with Zhongli. Where the hell is Zhongli going? Gone, गया, चला, खत्म। Zhongli, अच्छा उधर चला गया वो। अरे साथ साथ में चलते हैं ना भाई, अकेले अकेले जा रहा है ये तो। एक्टिंग ग्रैंड मास्टर इसलिए है क्योंकि ओल्ड ग्रैंड मास्टर भाग गया था। घोड़े और सोल्जर्स को लेके चला गया था। एक्टिंग ग्रैंड मास्टर जीन, ग्रैंड मास्टर वर्का, यप, ग्रैंड मास्टर वर्का। अच्छा ये वर्का क्या है? एक एक्सपीडिशन में गया है तो वो एक एक्टिंग ग्रैंड मास्टर बना। अच्छा बनाया था जिन। ओके ओके समझ गया। मतलब ये जो वर्का इफ आई एम टेलिंग इट राइट, वर्का जो भी है ये कोई कैरेक्टर है। ग्लेज लिलीज दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन मेरे को जोंगली नहीं दिख रहा है। लपेट ले भाई। It's time to sing whenever you're ready. Da 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 da. बारबरा की कॉपी कर रही है। What happened? उसको गुस्सा आ गया रे। Flowers are jumping. They look really angry. Is it because you sang a song from Mondstadt that they don't understand here in Leland? Let the show begin. Steady as stone. और ये तो रीजनरेट। ओ Forth, my blade. From whence you came. Leave it all to me. One with my blade. I'll protect us. Steady as stone. अब इसके पास कुछ तो है, दिख रहा है? वो क्या है? नहीं 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 नहीं, अलाउड ही नहीं है। I must leave no stone unturned. Let the show begin. Swift and merciful. अरे ओहो AK-47। अरे ये मरा नहीं। तेरी माँ का जाके नागा Steady as stone. मर जा साले। A touch of frost. Those weren't glaze lilies. Glaze lilies wouldn't hit people. अरे इतनी खुजली क्यों आ रही है? हैं? अरे ये इतनी ज्यादा क्या क्या बोल रहे हैं? मैंने गलत सुना है होगा। भाग ही नहीं। अरे रे रे, ओके तुम लोग
Nega. Nega, welcome to the stream. Those flowers put up quite a fight. Okay. This little monster is known as a whopper flower. Whopper flower. Okay. Your team is weird. Exactly. Like me. Exactly like me. Strange. These petals look interesting. The glaze lilies used as a disguise were buried with the whopper flower for too long. The result seems to have surprisingly potent medicinal value. Let's collect what we can of these petals. Well, that's nice and all, but will those petals be useful for the rite of parting? Unfortunately, no. Yo, Chichi man, welcome to the stream, Chichi man, bruh. It's just he's using Shongyu against Cryo Whooper. अरे sorry, हाँ यार. Shongyu भी क्रायो है और वो ऊपर भी क्रायो है. गलत कर दिया. Okay. That's so lame. Excuse me. Are Ganyu. you searching for glaze lilies? Exactly. I'm searching for you as well. Oh, hey, it's... What's her face? Greetings, I Ganyu. can't remember. Hello, traveler. I'm surprised you still remember my name. I remember everybody's name, especially you. That reminds me. How was your visit to the Jade Chamber? Well, it sure would have been better if you told us how to get up there. Didn't I tell you the way? Surely I did. Nope, we found the way on our own. I guess it was our fault for not asking. Oh, I see. Uh-oh. I guess I really did forget to tell them. Bro, you are cool, but don't use mono elements. Mono elements मेरे को नहीं पता. अरे अभी अपन इतना ये भी नहीं है कि मेरे को पता है mono नहीं पता मेरे को. And he's still kind of early into the game. He'll get a hang of it. Yes, exactly, Sukruti. Otherwise you will get irritated. Yeah, I can help you, bro, with team. How is it mono cryo? Actually क्या हो गया पता है, तेरे को बताता हूँ मैं. Something seems a little off about Ganyu. वो क्रायो थे और मेरे को उनके ऊपर शोंग्यू नहीं यूज करना चाहिए था क्योंकि शोंग्यू और ये दोनों क्रायो है. तो क्रायो एक दूसरे को इतना नहीं. मेरे को एक्चुअली नोएल यूज करनी चाहिए थी, लेकिन चलता है रे. मेरे को नोएल नहीं तो फायर वाला कैरेक्टर यूज करना चाहिए था. I get it. She's acting different from the first time. we met. Actually, slowly, What is her serious attitude now? slowly I'll get to the point जब मेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये वाला एनिमे है तो ये वाला एनिमे तो ये. Okay, got it. Ah, well, I met you at that time as an emissary of the Tianquan. But now, I am simply out on a stroll to see the flowers. Okay. You came all the way out here to see the flowers? Why not just enjoy the gardens of the city? I mean same elements. Okay. I have Ganyu and Zhongli but don't know how to use them. I also don't know how to use them. So we are on the same team, brother. By the way, Pyro are cool. Okay. मेरे पास बेनिट होता ना तो मजा आता था उनको मारने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है ना. अपन ज्यादा पायरो एनिमीज को भी नहीं मारते ना. Yujing Terrace is where Rex Lapis parted from this world. Yeah. If I strolled through those lonely gardens now, I wouldn't be able to bear it. Whenever my duties take me near Yujing Terrace these days, I draw the windows to block my view of the gardens. Oh, sorry. We shouldn't have brought it up. I can help No, everyone. It's quite all right. I just haven't processed my I think you emotions mean yet. Pyro is hot. Pyro is hot. I can help everyone. What is your air level, brother? When the Archon War came to its end 2,000 years ago, the first iteration of the Seven would gather in Liyue and drink with Rex Lapis. But 5 of those original 7 had already passed before Rex Lapis. It's truly a changing of the guard. Okay, nice. So that means... Yes. Now that the spirit of Rex Lapis has returned to the heavens, only Barbados of Mondstadt remains of the first 7. Okay. The other 5, including Inazuma's Raiden Shogun,
are no longer the same friends from 2000 years ago. इनाजुमा's राइडेन शोगन. So ये थोड़ा सा इधर मिल चुका है अपने को. एकदम टुकड़ा मिलेला है एकदम राइडेन इनाजुमा का टुकड़ा मिलेला है मेरे को. ये दिख. ओ भाई दिख रहा है क्या? बाय द वे मेरे को यही करना था. मतलब उधर दिख रहा है क्या? नहीं ना. हाँ ये शो मी योर टीम ब्रो. आई विल शो यू. जस्ट 1 सेकेंड. बेनेट डैमेज मस्ट इंक्रीज करता है. हाँ लेकिन है ना एक्चुअली I am AR-55. Oh, AR-55. Nice, bro. These people are AR-56. LMAO. Vaibhav is right. Chi-Chi is better. वैभव देख कैसी एक्टिंग कर रहा है कि भाई अरे भाई Alloy is better. I'm a Kaya main lol. Can't get used to Chi-Chi. अरे फिलिक्स को तो एलॉय मिल जाना चाहिए. ट्रैवलर इज ओनली बेस्ट कैरेक्टर. Chi-Chi सुप्रीमेसी. Sukruti, I am AR-55. What about you? He is AR-56. Of the current 7 Archons, the youngest is Sumeru's god of Dendro. Sumeru's god of She's nearly Dendro. 500 years old, whereas Rex Lapis was more than 6,000 years old at the time of his passing. अरे बाप रे. Sumeru god of Dendro. ये जो Dendro है, Sumeru god of Dendro. This is the person. इनाजुमा के बाद जो सिटी खुलेगा वो है Dendro, right? I am सिटी के वो अरे भाई मेरे चश्मे ने मेरे को मार दिया. सिटी नहीं, जो भी खुलेगा वो Dendro होगा. तो ये शी इज मतलब वो लड़की है क्या? merely 500 years old. तो तभी रेक्स लैपिस more than 6,000 years old. अरे रे नाइस. थोड़े टुकड़े मिल रहे. This means that Liyue had been under Rex Lapis's rule from the moment it was first founded 3,700 years ago. Okay. The city has never had to bid farewell to its deity. Okay. Chi-Chi needs just sacrificial then. Lol, she is cool. Damn. मैं बोलती हूँ सब कैरेक्टर अच्छे हैं. प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा यूज करना है. एग्जैक्टली देखो पता है कैसा है. मैं बताता हूँ, रुक जाओ इनको खत्म होने दे फिर मैं बताता हूँ कि मेरा प्ले स्टाइल. सबका प्ले स्टाइल अलग होता है रे. एवरी पर्सन्स प्ले स्टाइल इज डिफरेंट. दे लाइक टू प्ले डिफरेंट and I like how I like to play. I'll tell you how I like to play. Just give me one second. So what do you think of this farewell? Huh? This is a little sudden. As a mortal, I've never dared to imagine a Liyue without Rex Lapis. But as an Adeptus, I think I will eventually come to grips with reality. Since Rex Lapis has passed, the time of Liyue's contract with the gods and Adepti has now reached its end. Huh? Did you just say as an Adeptus? Yes, I am a mix of human and Chilean. Chilean, okay. Adeptus blood flows through my veins. I fought for Rex Lapis and the city of Liyue during the Archon War. After the war ended, I signed a contract with Rex Lapis and took the position as secretary for the Qixing. I've continued those duties to this very day. So you're how old? That explains the forgetfulness. Okay, so you're half whatever it is. That explains the Well, let's save that conversation for another day. You say that you are here looking for glaze lilies? Exactly. I also know where wild glaze lilies can be found. See, I've just picked one myself. Here, you may have it if you wish. We dare not refuse it. Oh, so did you sing a song before you picked the lily? Indeed, I did. I know this tradition well. In fact, I sang a local Liyue ballad to it. Wow, so you really know your stuff too. Thanks, Ganyu. No, it is you who I should be thanking. If not for this chance meeting, I never thought that I would be able to contribute to the upcoming farewell for our ancient lord. Okay. If you would excuse me,
I should return to my work now. Good luck. And that just about does it. Our preparations for the rite of parting are mostly finished. Given the ease of picking glaze lilies, I think this was a fitting end to our tasks, in more ways than one. Zhongli, you seem suited to working in agricultural department. Yeah, Development. Paimon can already imagine him starting a business in Liyue. I've had enough ventures in my life already. Beginning a new undertaking is always difficult at first, and requires no small amount of effort. And once business is at full steam, the stress of it all only wears away at you over time. So you must be careful to take the time to step back and re-examine yourself. If left unchecked, the wear and tear on your heart may go well past mending. Wow. See? Zhongli sounds like he's already seen it all. Alright, I think it's about time we head back to Liyue Harbor now. Yes. Let's just go. So देखो मैं बताता हूँ मेरा प्ले स्टाइल ऐसा है सबसे पहले तो इसको हटाओ हाँ ये क्या हो गया था निंगवांग को ले लो Understood. देखो पायरो कैरेक्टर जो क्रायो कैरेक्टर रहेगा हाँ उसका मेरे को नहीं पता ठीक है मतलब जो बर्फ वाला कैरेक्टर रहेगा उसके लिए मैं ये नोएल को यूज करता हूँ बट उसको छोड़ के मैं बारबरा लेता हूँ एनिमी को फ्रीज करने के लिए बारबरा की वाटर एबिलिटी से फिर ये लेके एनिमी को फ्रीज करता हूँ और जैसे एनिमी फ्रीज हो गया तो नोएल से मारता हूँ ठीक है ऐसा मेरा ये है और इसको मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है बिकॉज इससे ना थोड़ा ये बढ़ जाता है शील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है बाकी निंगवांग इज ऑल्सो बेटर वेरी बेटर बट फिलहाल के लिए मतलब ये मेरी स्ट्रेटजी है एनिमी को फ्रीज करो फिर उसको नोवेल से मारो एनिमी को फ्रीज करो लेकिन एक्चुअली वो काम नहीं किया था क्योंकि जो वूपर फ्लावर थे वो क्रायो वाले थे दैट इज द ओनली रीजन ठीक है समझा गया ये अपना प्ले स्टाइल है मेरा प्ले स्टाइल है कि मेरा प्ले स्टाइल ऐसा है एनिमी को फ्रीज करो फिर उसको मारो ये सिंपल ये खत्म मेरा खत्म हो गया प्ले स्टाइल खत्म हो गया समझा अब चलते हैं वापस और राइट ऑफ पार्टिंग में चलो यहाँ पे जाना इधर से उड़ के जा सकता हूँ मैं या फिर अच्छा इधर से ही जा सकता हूँ कोई सेकंड ऑप्शन नहीं बिल्ड बेडो यो it तो does 52k okay it Exorcism uses thaumaturgy and martial arts to conquer evil. There are other means to the same end, but they are not the true way. what do you want Huh? What happened? The city gate is swarming with noob. इसका नाम ये Ah, you're the consultant to Wangsheng Funeral Parlor. Mr. Zhongli, I presume. क्या बात है भाई ये फटुई इसका नाम फिलिक्स है मजा आ गया भाई मजा आ गया अपना नाम भी फिलिक्स है इसका नाम भी फिलिक्स है मजा आ गया भाई मजा आ गया The Millilith are watching our every move now. These are desperate times. We mustn't act rashly. okay Desperate times? The Adepti of Joyun Karst are finally on the move. Do they intend to exercise force? Most likely. I've heard that some members of the Qixing have already gone to meet them. Well, I say meet, but it's more like they're attempting to stall the Adepti outside the city. फिलिक्स फटुई में आ गया अरे मे बी दैट इज द रीजन कि मेरे को ये मे बी दैट इज द रीजन कि मेरे को चाइल्ड पसंद है भाई साहब ओ भाई मैं दुश्मन के साइड से हूँ पहले ही बता रहा हूँ मैं दुश्मन लोगों के साइड से हूँ पता नहीं क्यों However, both sides were quite obstinate and hit an impasse.
Felix, whatever is here is true. I believe you. It seems inevitable, given the current situation. The Adepti do not acknowledge the Qixing. They only acknowledge the contracts of the Geo-Archon. If the two sides come to blows, Liyue Harbor will be in no position to stop them. Okay. Surely the Liyue Qixing are not the sort to give in so easily. I love Beiro. She's counter one like Yungji. Make Pyro Xingyang. Okay. I wasted nearly 600 resin on cryo damage bonus. You both have glasses. Exactly. You need Their this. boneheadedness is known throughout the lands. Actually, Yet it's because of that obstinacy that mortals and Adepti are now on the verge of conflict. verge of conflict. Okay, listen, Felix. This is not a glass. This is a mask. If you look properly, if you look closely, this is a mask. And what now? How is it that the Fatui have come under fire? That's all Ningguang's doing. She proclaimed that in these tumultuous times, the Millelith must rein in the actions of the Fatui. Okay. Only now do they want to start keeping tabs on us? That's the Qixing for you. Anyway, Mr. Zhongli, you're one of Child's close associates. Please understand that your actions will reflect on us. Don't let anyone catch you off guard. Okay. It looks like things are about to boil over in Liyue Harbor. Is there anything we can do? Do you intend to use your neutral identity as an intermediary between both sides? Or will you use your sword to turn the balance? I'll use my sword to turn the balance. Neither path is an easy one. Okay. Oh, by the way, Mr. Zhongli, we've heard that the Wangsheng funeral parlor has also been caught up in all of this. Okay. They're currently squaring off with the authorities at the gates. Okay, Felix. What else? Things are taking a turn for the worse. I'm afraid I must leave now to handle things back at Wangsheng funeral parlor. I hope that Master Hu has been able to keep things under control for the moment. Master Hu. Okay. Consider your next course of action carefully, traveler. If you're trying to prevent an explosion, it may be wisest to look for the fuse first. अरे एक्चुअली देखो रुक जोंगली रुक जा अरे जोंगली चला गया जोंगली दो फीलिक्स से बात कर रहा है देखो कंसीडर योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन केयरफुली फीलिक्स और वो सामने वाला भी फीलिक्स है जोंगली बोल रहा है जोंगली भी कंफ्यूज हो जाएगा भाई ये भी फीलिक्स वो भी फीलिक्स Having connections with the Fatui seems to be quite the double-edged sword. So what does Zhongli mean by looking for the fuse? Child. Oh, Paimon gets it. If there's anyone that wants to see the whole city turned upside down, it's definitely him. He must be waiting for the moment when no one is watching to do something really bad. But where could we find him now? Where would he go at a time like this? Follow. Okay, Felix, what else do you have to offer? The Liyue Qixing. To think that they'd go for us Fatui the first chance they got. Once the Adepti send the Qixing packing, we'll just set up foreign relations with them instead. Okay. Nice to meet you, Felix. Let's go. By the way, ये कितना दूर है? ये अरे चाइल्ड अपकमिंग चाइल्ड से झगड़े करने गए क्या अभी मे बी हाँ अभी चाइल्ड से झगड़े करने का टाइम आ गया रे बाबा इट्स गोना बी epic because I'm gonna lose because I know I don't have good artifact. Child is going to beat the hell out of me, but I'm going to love it. Let us go. मजा आने वाला है रे चाइल्ड
बहुत मार खाने वाला हूँ मैं, बहुत मार खाने वाला हूँ। Get yourself a good healer. Barbara is a good healer. अब ये अपकमिंग फाइट बहुत हार्ड होने वाली है। तो लेवल अप करो, तो लेवल अप करो, लेवल अप करो, लेवल अप करो। चाइल्ड की फाइट आने वाली है, चाइल्ड की फाइट आने वाली है। चाइल्ड इज माय फेवरेट कैरेक्टर। चाइल्ड की बैटल होने वाली है। खुशी खुशी खुशी। मुझे पता है मैं हारने वाला हूँ, लेकिन मेरे को बहुत खुशी हो रही है चाइल्ड से थोड़ा झगड़े करने में। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया, 7000 HP हो गया। इसको थोड़ा कर दो बस, इतना इतना कर, ठीक है। इसके आर्टिफैक्ट में जाओ, ये ठीक है। अभी आर्टिफैक्ट बढ़ाना पड़ेगा मेरे को। आर्टिफैक्ट इसका नहीं बढ़ाना है मेरे को, जो डैमेज डीलर है ना उनका आर्टिफैक्ट बढ़ाओ। व्हाट इज योर 161 लेवल 10 पे वो भी। ओके, लेट इट बी। निंगवांग, व्हाट अबाउट यू? निंगवांग की तो कोई इज्जत ही नहीं है, बेचारी को एकदम गंदे गंदे आर्टिफैक्ट दे के रखा है मैंने। मतलब मैंने कभी उसके पास देखा ही नहीं। तो चलो इसको दे देते हैं अच्छे वाले आर्टिफैक्ट। व्हाट शुड आई गिव यू? 2 पीस इंक्रीजेस एलिमेंटल मास्टरी बाय 80%, increases charged attack damage by 35%, 4 पीस increases। Wanderer's Trout मेरे पास है क्या? 4 है मेरे पास। 1 2 बस, 1 2 3 4। 2 पीस increases elementary mastery by 80%, so I should use this one। इसके ऊपर निंगवांग के ऊपर ये सही रहेगा। Are you F2P? Yes, I am F2P। वेपन लेवल 50 कर रो नोएल का। हाँ, वो भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू थैंक यू। इसको भी भेज देना। ठीक है, अब ये हो गया। ये 2 पीस आर्टिफैक्ट 2 पीस मिला, मेरे पास 4 पीस है नहीं। ये सबसे अच्छा वाला। सबसे पहले तो वेपन नहीं, तो रुक जाओ, अभी इधर है ना, तो इधर ये कर लेता है। HP परसेंटेज नहीं चाहिए, HP, डिफेंस, अटैक 16 अटैक। चलो ये ले लेते हैं। व्हाट इज दिस? बर्ज़र्कर्स इंक्रीज क्रिट रेट बाय 12%। मतलब इधर भी बर्ज़र्कर कुछ तो लिया। इंस्ट्रक्टर टी इंटर मास्टर बाय 80%। ये वाला है। अरे तो मैंने बहुत अपग्रेड करके रखा हुआ है। व्हाट इज दिस थिंग? जियो डैमेज बोनस 6.3%। स्विच, थोड़ा सा इसको इनहांस कर लेते हैं। लेवल 10 तक डाल देता हूँ मैं। जियो कैरेक्टर डोंट नीड एलिमेंटल मास्टरी। अच्छा, वेपन, अच्छा ओके ओके, मैं वो आर्टिफैक्ट हटा देता हूँ। बट इसको जियो डैमेज बोनस तो चाहिए ना, तो ये देता हूँ मैं। अरे आर्टिफैक्ट ही खत्म हो गए मेरे। लेवल 2 की आर्टिफैक्ट डालता हूँ मेरे को। इसको लेवल 10 तक कर लेते हैं। वैसे भी लेवल 4 स्टार आर्टिफैक्ट है ना, तो चलता है। एक और लेवल।
अरे यार थोड़ा सा बूम। ओके जियो डैमेज 24% हो गया, ठीक है ये ठीक है इतना। एलिमेंटल क्या जियो डैमेज डजंट नीड ना एलिमेंटल मास्टरी, तो ये हटाता हूँ मैं। प्लंज ऑफ डेथ 4.2%। if I do this then ये भी वो तो वही तो है वॉन्डरस ट्राउट। व्हाट इज दिस? एनर्जी रिचार्ज है, जियो डैमेज को एनर्जी रिचार्ज भी चाहिए कि नहीं? अटैक क्रिट रेट increase normal attack and charge damage by 15%. Okay, this one is good. एनर्जी रिचार्ज तो यही ले लेते हैं बस जियो डैमेज के लिए, चार्ज डैमेज। और फिर एक और चाहिए मेरे को। व्हाट इज दिस? वॉट एवर इट इज, मार्शल आर्टिस्ट। मार्शल आर्टिस्ट में मेरे पास 2 ही आर्टिफैक्ट है और दोनों इधर ही है, तो मेरे पास 2 पीस तो होंगे ही नहीं। तो व्हाट इज दिस? नहीं ऑल करो ऑल करो ऑल करो ऑल करो। कोई भी लेवल का अच्छा आर्टिफैक्ट नहीं है ना? रुको ये दे रहा हूँ मैं उसको। डिफेंस, क्रिट डैमेज और डिफेंस। अरे एनर्जी रिचार्ज नहीं चाहिए, ये दे देता हूँ क्रिट डैमेज और डिफेंस, ठीक है। इसका आर्टिफैक्ट 0 लेवल का रहने दो क्या? ये जी तो मैंने दे दिया इसको। ये वाला थोड़ा अच्छा वाला देते हैं इसको, जो भी देना है। व्हाट इज इट? डिफेंस 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 एचपी डिफेंस क्रिट डैमेज 8.4%। क्रिट डैमेज 8.4%। अच्छा ये वाला देता हूँ। अपनी नोएल के लिए तो सारे आर्टवर्क दे दिए मैंने। 2 पीस कट बारबरा। ओके अरे भाई सॉन्गियो के पास तो भाई सारे नकली आर्टिफैक्ट है। इसको दे दूं क्या? एलिमेंटल मास्टरी। अरे भाई इतनी खांसी क्यों आ रही है मेरे को? ये ट्रैवलर को दिया है मैंने। ट्रैवलर को दिया है क्या ये मैंने? काहे को? इसको दे देता हूँ 125। और ये क्या है? 68। तो ये दे दे भाई तू उसको। स्विच। और ये फ्लावर में क्रिट डैमेज और एनर्जी रिचार्ज। अटैक 4 एनर्जी रिचार्ज अटैक दे ले। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं वो चाइल्ड को नहीं मारने वाला हूँ। बहुत गंदी तरीके से मरने वाला हूँ, लेकिन थोड़े अच्छी वाली मौत होगी, एकदम बेइज्जती वाली मौत नहीं हो जाएगी। 2 पीस इंक्रीज है। ओके व्हाट इज दिस? क्रिट डैमेज 8.4%। डिफेंस क्रिट डैमेज ले लेता हूँ मैं 8.4%। ओके हटा दो।
heart be pure, evil be erased. Mind. क्या था रे, क्या था? नोएल राइट? नोएल का 41 है। अरे देवा, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेवल 50 हो गया, नाइस। 290, अच्छा 266 है। एसेंड करने के बाद ये चाहिए मेरे को। ये क्या है? संडे को मिलेगा। ले लेंगे। वाइट ब्लाइंड अपनी अपग्रेड हो चुकी है गाइस। अभी 6% है। 101 चार्ज शोंग्यू की तलवार। और भाई शोंग्यू की तो लेवल 60 की है, इसकी लेवल 50 है। ये भाई आएगा ना मजा वीडियो। इसकी लेवल बेचारे, इसके पास ये वाला सादा वाला बुक है। सादे वाले बुक को मेरे को अपग्रेड नहीं करना चाहिए, बट फिलहाल कर लेते हैं क्या? इसके टैलेंट भी कर लो। टैलेंट ओके, टैलेंट ऑलरेडी है। इसका टैलेंट कुछ नहीं है, इसका टैलेंट बढ़ा रहा हूं मैं। ओके नाइस। डैमेज, स्किल डैमेज 172% से 185 हो जाएगा। ओके ये हो चुका है। बारबरा का टैलेंट बढ़ाना चाहिए क्या? बढ़ा देते। चला कोई बात नहीं। आज नहीं तो कल करना ही है, तो आज ही कर ले। HP रीजनरेशन के ज़्यादा ही अजीब नंबर है, लेकिन चलो। ओके ये हो चुका है। इसका टैलेंट ऑलरेडी अपग्रेडेड है। निंगवोंग का नहीं होगा। Purged. World be... I always forget that... मुझे इसका अपग्रेड करना चाहिए क्या? बुक चाइल्ड भी तो, चाइल्ड भी वाटर ही है ना, उसको ये डैमेज नहीं करेगा। That's part. हाँ चाइल्ड। देखो ये है क्या? कैस्टेस मिलती है क्या? ओ भाई क्या झाड़ है। चाइल्ड फाइट होने वाली है भाई साहब। मेरे को तो एक्साइटमेंट हो रही है ना। इसके बुक लेवल 1 का है रे। इसके बुक को मुझे नहीं, कोई दूसरा अच्छा बुक है क्या? व्हाट इज दिस थिंग? एलिमेंटल मास्टरी एंड व्हाट इज दिस? एनर्जी रिचार्ज। इन दोनों में से कौन सा लूँ बताओ यार, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। मेरे को जरा चार्ज फ्रोजन और हाइड्रो फ्यूल एंड व्हाट इज दिस? चलिए यही ले लेते हैं बटा, कोई बात नहीं। लेकिन ये लेवल 3 वाला आर्टिफैक्ट है, मतलब 3 स्टार आर्टिफैक्ट है। इसको इनहैंस करना मुझे लग रहा नहीं है, इसको इनहैंस करना चाहिए। छोड़ो हटो, चलो भागो। करना ही नहीं, जो है अभी जो होगा देखा जाएगा। गो इनसाइड द गोल्डन हाउस। आजू बाजू कुछ है गोल्डन हाउस के आजू बाजू? हेलो चाइल्ड, अपन आ गए तेरे को मारने के लिए, तेरे से मार खाने के लिए। दोनों ही सही है। रिकमेंडेड पार्टी लेवल 47 और मेरी कितनी है मेरे को देखने गए रे। सारे मेरे मैक्स है ना 49 39। क्यों रे, तेरे को क्या वगैरह बाबा?
इसको क्या हो गया बेचारी, इसको मैंने पीछे छोड़ दिया क्या? Cashing in time and Mora for power. Interesting. This shows their true value. ओके मुझे इसका डायलॉग सुनना था बस। इतने सारे बुक और 85 बुक हो जाएंगे यूज। अरे रे 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 80 बुक यूज कर लेता है। 1 2 3 ठीक, इसको रहने दो अभी। हो गया। तो वेपन कितने लेवल का है? 20 लेवल का है। इसके वेपन को एसेंड नहीं कर सकता मैं, एक वेपन पर ये नहीं है मेरे पास। चलो ये, अरे इतना सब कुछ करा है तो ये भी कर लेते हैं। देखो थोड़ा तो बढ़ गया, 39 से 94 हो गया। 39 से 94 हो गया, थोड़ा बढ़ गया। कुछ तो होगा, कुछ तो थोड़ा सा डैमेज ज्यादा तो देगा ये। चलो चलते हैं, अब चलते हैं। अब नो सेकंड थॉट्स। यस दिस इज माय पार्टी। 49 49 49 49 47 रिकमेंडेड है, मेरे 49 है। तभी भी मैं इतना गंदा मार खाने वाला हूँ ना। देखो अपट अपट के मारेगा। Wow, अपट अपट के। this is the golden house? यस दिस इज द गोल्डन हाउस। अभी यहाँ पे आएगा मजा। It looked impressive enough from the outside, but who would have guessed that it was even fancier on the inside? And so full of Mora. कितने ज्यादा है भाई। चलो भर लो, लपेट लपेट लो लपेट लो। This is where all of Tibet's Mora is minted, right? In that case, maybe they won't notice if a few Mora go missing. अरे इसको किसने मार दिया? टच अ सिंगल मोरा एंड वी आर डन यार। Oh, so it's a trap. Tricky. Good thing Paimon's got you here. But even if we can't take any, we can still have a closer look, right? Exactly not. Or better yet, take a nap on top of a mountain of Mora. It's like a dream come true. We'd better check on Oh, right. Exuvia That's first. business. It's quiet. Too quiet. Surely someone's gotta be guarding something as important as the Exuvia. Huh? Look! What happened here? The Millelith. Uh-oh. Paimon smells trouble. Quick! We have to go make sure that the Exuvia is all right. Child, अरे रे रे रे। ये पूरी आवाज गूंज रही है, देखो। ये तुम्हें सुनाई नहीं दे रही होगी शायद। डिपेंड करता है ना, ईयरफोन हेडफोन्स पे डिपेंड करता है ना, पता नहीं। You've already fulfilled your task as guides, so why do you still linger here? Haven't you already seen enough trouble for today? नहीं, ट्रबल इज माय सेकंड नेम। चलो आजा, मेरे को मार दे चाइल्ड, मेरे को मार दे। मेरी यही इच्छा है। Huh? Who's there? If you were Fatui, I imagine that you would be entitled to a generous reward from the Tsaritsa herself. But now, you're nothing but dross, and you're in my way. How did you find out it was here? Where should I start? Well, I've never been one to beat around the bush, you know. But who could have possibly guessed that the god of Geo would mysteriously perish the very moment I arrived in Liyue, and that the Exuvia would subsequently be hidden away? If it weren't for that lovely little rite of parting ceremony you put together, it would have taken me a whole lot longer to get the information I needed. Okay. Stopping the Mora mints,
hiding away the Exuvia. The Chising are really pulling out all the stops this time. So you've been planning to take the Gnosis from inside the Exuvia all along? As one of the 11 Fatui Harbingers, it's my duty to see the will of the Tsaritsa fulfilled. Okay. She will get that which she desires. 11th of the 11. मुझे पता है. No, it's a no if I have anything to say about it. Not if I have I'm any- not asking for your blessing, and there's nothing you can do to stop me anyway. Okay. You're through. You're through. The time for discussion and diplomacy has already passed. I mean, if it were up to me, I would have skipped that stage to begin with. But I'm willing to do as the Tsaritsa deems fit. Okay. Either way, we now come to my favorite part. A simple pleasure, and one that I am oh so delighted to be sharing with you. And what is it? The battle. Battle? So you're the type that goes looking for trouble, huh? You could say that. When Signora offended the deities outside the cathedral in Mondstadt, she swiftly left the scene once her mission was accomplished. Instead of confronting you directly, she chose to rely on the snow and ice to make her escape. She wouldn't want the knights to come running towards the sound of battle now, would she? When she faces a worthy opponent, she will prioritize her mission, weigh the outcomes, and consider the consequences of her actions. But as for me, the greatest pleasure of being a harbinger lies in crossing blades with strong opponents. Okay. We won't let what happened in Mondstadt ever happen again! Oh, so you intend to fight me? Good. I won't kill you, Traveler. I'll just play along, to feel the thrill of battle. Besides, you could never defeat me, not even in your wildest dreams. But hey, try to relish the fight anyway, because if you ask me, without that, what else is there? I could never defeat you. You're completely delusional. Delusional. Fighting talk, I love it! Now let's see you live up to it. भी आएगा मजा. This chance is hard to come by, so show me all you've got. So very few ever get the chance to square off with a Fatui Harbinger. So come now, amuse me, and don't you dare disappoint. How unbecoming. So quick to flee. Cowering already? Oh, no, 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 no. No, no, no. Run all you like. Steady as stone. अरे कुछ कर रहा क्यों नहीं है? ये तो You've made some progress. Let's dance. Don't waste my time. You're wide open. Give up. Leave it all to me. Not bad, not bad. Guess I should take you more serious. Haha, good. No wonder Signora was so अरे wary अरे of अरे you. अरे. Well, that just means I can go all out. Brace yourself. This is about to get tough. Now, show me what you can do against the might of a Harbinger. मम्मी रे देवा रे देवा देवा रे देवा. Let the show begin. Forth my blade.
Just leave no stone unturned. No use hiding back there. Don't waste my time. Swift and Ow! All you do is whence run. you came. A touch of frost. अरे रे वाह 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 Let's dance. You've got some skills. calm down, cool down, cool down, cool down, cool down. आराम से Steady as stone. Something else catch your eye? तो भाई अगर ये ब्रेसलेट नहीं होता तो मैं मर जाता बच गया Raging tide. अरे बाप रे बाप ओह No use hiding back there. It's nothing. Break. I'll crush you. The victor. ओ खत्म मर गई रे अरे अभी तो एक और फाइट बाकी है Leave it all to me. ऐसे कैसे मर जाएगी All you do is run. I'll catch up. Let the show begin. Got you. Steady as stone. Not bad. Not Your bad swordsmanship is अभी आएगा मजा That's about as far as you'll get. This is my favorite scene. पूरे गेम में ये मेरा favorite scene है जब ये मास्क पहन के वो बन जाता है ना हाँ love it Didn't think you had that card hidden up your sleeve. You were just playing us to get close to the Exuvia! Oh, quiet down. Stop acting like some wide-eyed recruit. You've seen this world. You of all people should know. This should have been expected. Well then, I'll be taking Morax's Gnosis now. Huh? I see. Well, this is most unexpected. You beat me to it, didn't you? oh भाई love it भाई ये this is the reason I love child ये इसकी वजह से ये This is going to cost you. Oh भाई nostalgia दूध आवाज क्यों आ रहा है अभी खत्म रुक जा भाई रुक जा अरे ये नहीं रे मेरे को उसको जिंदा करने दे अपनी नोएल को जिंदा करने दे निंगवांग को जिंदा करने दे whatever food I have I eat थोड़ा सा खाना खा ले और थोड़ा सा कुछ बैटल के लिए लेना पड़ेगा मेरे को व्हाट इज इट इंक्रीज ऑल पार्टीज मेंबर अटैक बाय 95% क्रिटिड बाय 12%
इसके ये वाले रूप को मारना हार्ड है, तो मेरे को कुछ खाना तो खाना पड़ेगा। यूज आजा भाई। You got to the Gnosis ahead of me, didn't you? Did you simply move faster? Or did you leak the information regarding the Golden House to me on purpose? No matter. Hand the Gnosis over, now. Don't make me take it from you. We didn't take it! नहीं निंगोंग तो जिंदा रहना है, तेरे को जिंदा रहना है। Let's dip. One with my blade. Submit for judgment. Leave it all to me. Time to clean up. और ये तो जल्दी मर रहा है। वो डॉल्फिन का भी बनेगा, डॉल्फिन या क्या बनता है ना, जो बनता है वो। डॉल्फिन बन गया, डॉल्फिन बन गया, डॉल्फिन बन गया। हाँ भाई डॉल्फिन नहीं, वो तो वेल है। हाँ भाई I must leave no stone unturned. Hi. Die here. Leave it all to me. Someone needs it. क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? Someone needs it. मर गया मैं, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया, मर गया। Where are you? आजा भाई। A touch of frost. One with my blade. डॉल्फिन डॉल्फिन डॉल्फिन, वेल 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 वेल। अरे को डॉज, नहीं 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 नहीं। I'll protect us. La 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 la. Eek. Steady as stone. मर जा मर जा मर जा, थोड़ा सा ही बाकी है, प्लीज प्लीज। कम ऑन नाइस, कम ऑन, नाइस नाइस नाइस। Some you win, and some you lose. ये मैंने पहली बार इसको मारा है, पहली बार। ये मेरे लिए स्पॉइलर नहीं है, अभी अभी मेरे को पता है। वो दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने चाइल्ड को मारा है भाई। मैंने अपने जूनियर अकाउंट में भी नहीं मारा था। हाँ भाई पीसी में एडवांटेज है, बहुत ज्यादा एडवांटेज है। आई एडमिट नाउ, आई एग्री। भाई साहब मजा आ गया। मैंने आज तक कभी चाइल्ड को डिफीट नहीं किया था। हाँ मैंने खाना खाने की वजह से किया रहेगा, मे भी थोड़ा सा वो डैमेज पड़ गया, बट मजा आ गया। इसी बात पे लाइक करो गाइस। हम पानी पीते हैं, हमने ये डायलॉग नहीं सुना है, हमको ये डायलॉग सुनना है। मैं इतना ज्यादा मतलब जब भी मैं फोन में खेलता था ना चाइल्ड को मारने के लिए, मार ही नहीं पाता था, इतना ज्यादा इरिटेट होता था ना कि मैं फिर एग्जिट कर देता था। लेकिन मैंने रियल इसमें मार दिया इसको। ओह मजा आ गया रे, मजा आ गया रे। रुको मेरे को पानी पीने दो। या फर्स्ट ट्राई, यस एग्जैक्ट। अब वो भी फर्स्ट ट्राई में मारा, फर्स्ट ट्राई में। और वो भी देखो, मैं जब भी फोन में खेलता था तो मेरे को थोड़े थोड़े डायलॉग्स पता थे, ठीक है, मतलब ये ऐसा बनने वाला ये तो पता था। इसके आगे अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके आगे मैंने खेला ही नहीं, इसके आगे मेरे को कुछ भी नहीं पता। ये चाइल्ड ही रीजन है मैंने गेम डिलीट किया था, बिकॉज मैं इसको डिफीट नहीं कर पाता था। फिर दिमाग खराब हो गया मेरा, मैंने गेम डिलीट। अभी मैंने इसको डिफीट कर दिया। अब आएगा ना मजा भिड़ू, अब आएगा मजा, अब आएगा। रुको रुको रुको, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। रुक जाओ, पानी पीने दो मेरे को। मेरे को लगा सब मेरे कैरेक्टर मर जाएंगे, बट सिर्फ मेरी निंगवांग मरी।
इसके आगे जो डायलॉग्स है वो मेरे लिए एकदम नए हैं, तुम लोग को तो पता ही होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत नए हैं, अभी आएगा मजा। लेट अस गो चाइल्ड। Look! Child's back to normal again! ओके Well then, time to cool off. ओके, टाइम टू कूल ऑफ। इसके बाद पे पुल, इसी बात पे पुल। अरे सुकृति भाई, 10 पुल करेंगे यार, 10 पुल करेंगे सुकृति, समझो। It seems the burden of the foul legacy transformation was too great for my body. I lacked the opportunity to think this through. And now that I consider the matter more carefully, you never had any chance of beating me to the Gnosis. Then how did they beat you? You had no connection to the Gnosis, no matter where it had been taken. Yes. That's what we've been trying to tell you! We didn't take it! Your show of ability today far surpasses that of Signora's initial assessment of you in Mondstadt. Tell me, how could that be? How could that be? अपने ये जो मैं बताता हूँ कैसे, how could that be, ये अपनी जो लाइव चैट है ना उसकी वजह से भाई। तू भी लाइव स्ट्रीम शुरू कर दे चाइल्ड, तेरा भी हो जाए। Because I'm collecting the power of 7. You already know the answer, don't you? Yeah. I can see it in your eyes. Exactly. चाइल्ड आई लव यू यार, चाइल्ड आई लव यू यार, एक नंबर, मेरा फेवरेट यार, दिल जीत लिया चाइल्ड ने भाई साहब। RNG गेम है, फर्क नहीं पड़ता 10 पुल या सिंगल पुल। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन मेरे को ऐसा समझो यार, प्लीज प्लीज। But if that is a secret you wish to keep, I guess I'll just have to curb my curiosity. Yeah. This battle has already left me satisfied. It has left me more than satisfied, brother. तेरे से झगड़ा करके मजा आ गया मेरे को। सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में कभी मिलेंगे, मचा देंगे रे भाई। लेकिन सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में मुझे लगता है, सॉरी सिंगल प्लेयर में तो मारा ना मैंने इसको, लेकिन स्टोरी बोर्ड में मारा है ना, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। चलो छोड़ो। Anyone who strives as I do to grow stronger shall be called a friend, even if our friendship can only be shown in battle against one another. Yes, of course. लेकिन एक्चुअल में इसको मारना थोड़ा सा हार्ड होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टोरी मोड में थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जब भी अपन जाते हैं ना उसको मारने, तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा। देखते हैं अभी क्या है। Pretty sure that's not the normal way to make friends. Yeah. Unfortunately, I must bring this amiable conversation to an end. My quest still beckons. Given that the Gnosis wasn't taken by anyone, then we must look once again to the beginning. Perhaps it was never in the Exuvia to begin with. Yes. In fact, it might be that the Exuvia was just a diversion of sorts. What? So you mean that... Rex Lapis still lives. Yes, it appears so. Interesting to say the least. It seems that the guardian deity of the capital of commerce is also well versed in little maneuvers beyond the boundaries of contracts. As such, we must now look to our backup plan. Backup plan? I had hoped it would never come to this, for the weak will be swept away in the process. The truth is, the world belongs to those who pursue strength. I seldom willingly involve myself with the weak. Unfortunately, we cannot be picky about our methods as Fatui Harbingers. Children must all learn to eat their vegetables sometime. Children must all learn to eat their vegetables sometime. इसका कुछ दूसरा मीनिंग बोलना चाहता है वो, कि पता नहीं क्या बोलना चाहता है। What are you planning to do? I will awaken the god that lies dormant beneath Guyon's stone forest. A god? Osial, overlord of the Vortex, who was defeated by Morax, the Geo-Archon in the Archon War, and who has remained pinned beneath the waves by the Geo-Archon's stone spears ever since. Okay. If such an ancient god were to be unleashed upon Liyue Harbor, defenseless without the protection of its deity, do you think the cunning Rex Lapis would just stand aloof and watch the ensuing destruction? But the Archon War ended 2,000 years ago. How can an ancient god appear in a world now overseen by the Seven? Simple. I've already prepared the means to awaken it. Hey, those are sigils of permission. Oh, Paimon remembers now. The Fatui have been researching them. I saw your research with your own eye, with my own eye. Indeed. The one that was given to you was just a byproduct of our research. With the power of so many sigils of permission concentrated in one place, along with that which was bestowed upon me as a harbinger by our Tsaritsa,
breaking the subduing might of the Geo-Archon spears for a time should be no obstacle. Using the powers of ancient gods in such a situation fails to interest me, and is largely against my principles. But knowing that such an action will not only force the Geo-Archon to show its hand, but you as well, that makes matters a little more intriguing. Damn, 4 बज गए. अरे 4 बज गया. I will have to end it. कौन आ रहा है? मैंने ये देखा नहीं, मेरे को पता नहीं. What the hell? इसके आगे मेरे को कुछ भी नहीं पता. Let's see. Will the nation that has lost its deity be swallowed up by an ancient malice once more? If you wish to drown together with the people of Liyue, you're free to stay and enjoy the show. कैसे भाग रहे थे वो? Huh? He's already gone. That guy is fast. What's going on? वो ये खुद टेंपल चल रहा है. ऑक्टोपस बोलते हैं. ऑक्टोपस है क्या ये? 1 more boss fight है? ये अभी तो मैंने चाइल्ड को मारा, थोड़ा थक गया मैं. रुको जरा, मेरा कैरेक्टर थक गया यार. वो Paimon's exhausted. Okay. If we hadn't happened to see the Jade Chamber flying over just as we came out of the Golden House, we really wouldn't have known which way to go. Did we make it in time? Is the Overlord of the Vortex still in the sea? It hasn't destroyed Liyue yet, has it? I don't know. What Are are you doing here? I'm here to watch this beautiful scenery. Let's just enjoy. चाय लेके आ जा. चाय लेके आ. Hold on. It's the Adepti. What are you doing on the Jade Chamber? Paimon thought you were arguing with the Chising. Is the fighting over? 1 2 3 4 ये भी आ चुका है. क्लाउड रिटेनर माउंटेन. मेरे को क्लाउड रिटेनर पता है, इसका नाम मेरे को नहीं पता. गानियू भी आ गई, नोएल भी आ गई, और ये शाओ भी आ गया. भाई साहब अभी तो फुल एकदम मचाने वाले भाई. पब्लिक मचाने वाली है. Faced with a calamity of such magnitude, we have agreed to put our differences aside for now and unite against this common enemy. ओके. मून कावर भी है यहाँ पे. Oh, Paimon gets it. So how do you plan to defend Liyue? Just seeing this Overlord of the Vortex guy puts a pit in Paimon's tummy. Even for... It's not just you. We've got new Millilith recruits who can't even stand at attention without shaking. The force of an ancient god's presence seems to be too much for ordinary people to handle. ये चिंग भी आ चुकी है. Which is why we must stop that monster before it gets any closer to Liyue Harbor. माउंटेन शेपर. अच्छा, क्लाउड रिटेनर, मून कावर, माउंटेन शेपर. अच्छा अच्छा. So the Archon War was fought 2,000 years ago against enemies like that thing? Now That's scary. So will the power of the Chising, Millilith, and Adepti gathered here be enough to stop that god? अरे टीपॉट से ग्रैनी भी आ चुकी है. अब ग्रैनी आ गई ना, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है. We've already discussed this together, and our conclusion is not necessarily. 5 Adepti in one place. Oh my. What? Wait, all of you are supposed to be the guardians of Liyue. Can't you think of something? One certainly could. Huh? The Qi-Sing did once 6. research the matter of the Guizhong Ballista when it piqued their fancy. 6 Adepti कौन है? ये 3 मून कार्वर, क्लाउड रिटेनर, और ये 3 हो गया. कचिंग गानियू 5, ये शाओ 6, कचिंग 7. सॉरी ये कैसे मतलब 1 2 3 शाओ, ये हाँ रुक जाओ. क्लाउड रिटेनर 1 2 3, ये गानियू 4, कचिंग 5, और ये बुड्ढी 6 लगता है. शाओ है क्या? पता मैसेज का नाम बताओ मेरे को. नाम बताओ, मेरे को देखना है. मैं ये पॉज कर रहा हूँ, रुक जाओ जरा. The Qi-Sing once researched the matter of
Guizhon when the fancy बता देखने दे मेरे को 6 कौन है? Who are those 6? शाओ भी है क्या? कचिंग नहीं मैडम, थिंग है एडेप्टस, तक कचिंग नहीं है, शाओ भी एडेप्टस है। ओ ओके 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 ओके, मतलब ये 1 2 3 शाओ, गान्यू और ये वुडी। अच्छा 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 1 2 3 4 शाओ 5 and 6। ओह ओके ओके, I got it। And as fate would have it, one who did craft the Guizhong ballista with one's own hands is here. For what could you mortals ever learn of Adepti mechanisms? Yet it would take one but a little tinkering to turn this ballista into an engine of war beyond your wildest thoughts. Okay. I suppose this is one blessing from the Adepti that we should be thankful for. So be it. We shall use the upgraded Guizhong ballista to fight off that god. All the Adepti here can lend their strength to man it. We haven't a moment to spare. Our battle begins now. अरे नाव क्यों रे? अभी 4 बज गए। Yep. मेरे निंग पे ऐसे कुछ भी नहीं करते। अरे देवा रे देवा। The 3 Adepti are manning the Guizhong ballista. Do not let the Fatui disturb their work. All able Millilith, with me! Let's go help too! We Adepti have not faced a god in several millennia. Let one see what you're made of then. What strength remains within you? What wishes to कितनी फटाफट हिल जा रही है भाई सब। क्या बात है कि कितनी फटाफट जा रही है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। Hello guys, how are you? Steady as stone. Have a load of this. अरे तीनों को मैं ही डिफेंड करूँ क्या? अरे उधर भी आ गया, उधर भी आ गया। Spirit Blade, attack! Looks like I missed first. That is Osial's divine power. I am very familiar with it. कौन है और कौन है और कौन है? Be careful not to get hit. The Fatui! Their attacks are unrelenting! How daring. Snezhnai's diplomats will answer for this afterward. Every last one. I will end you. Your life is mine. The ancient god's attacking again! There are so many Fatui too! We can't look! Were you about
to say we can't hold them, children? पूरे मोटे उसको हील कर रहे तू तेरी माँ का साचे नागर My boy, don't lose heart. Here, take this. हट मर जा Adeptal energy. That light from your body. It's like the time in Julian Cars. Wow, it's Madame Ping's shockwave. It's really strong. कितने फटाफट हिल जा रही है इनकी Needs assistance. देखो 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 ओ भाई My work. Miscalculated. As a dutiful maid would. Now you're not going anywhere. अरे मर जा नहीं हेलो 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 नो With the blood of the Chilean, I guard you against evil. Cast your fear of injury by the wayside and fight with all your might. I too did this during the Archon War. Huh. So this is what Ganya's like in a fight. My name means swiftness. Take my power and run as I do. शाओ की पावर मिल गई ओहो ओ भाई हमें कितना स्पीड भाग रहा हूँ मैं ओ भाई मजा आ रहा है रे आ जाओ एनिमीज दे आर नॉट कमिंग अच्छा मुझे सब दो मिनट तक ये डिफेंड करना है टचिंग इज अडेप्ट इन माय हार्ट ओके ओके इन योर हार्ट मिलेगा आई एम सॉरी इफ आई एम नॉट रीडिंग एनीबॉडीज चैट Child, you are strong in body and spirit. Perhaps you can withstand 3 forms of adeptal energy at once. This will hurt a little. Please bear with us. चलेगा रे Once you've adapted, आने try दे to use them in battle. आने दे अरे उधर है क्या अरे बताओ तो सही A touch of frost from whence you came. This isn't good. अरे ये जिंदा है मर जा और कौन है गुरु उधर आ गया उधर पूरी पार्टी है Let's dance. Swift and merciful. मर जा मोटे Spirit blade. Attack. My duty. Exercise caution. I fear that the god's power has reached its peak. मर In गया other words, हाँ मरी if we hold here, there's nothing worse to come, right? Leave it up to me. As a good knight should. I miscalculated. This isn't good. Stay right there. Yes, this is it. Steady as stone. This isn't good. और इसका हेल्थ बहुत कम है यार मर गया मैं खत्म है Submit for judgment. My duty. हाँ भाई यार इधर आ गया The Fatui's numbers are thinning! Fight on, comrades. Once we finish this lot off, the Adepti will be able to deal with the god in peace. 4 सेकंड 14 सेकंड हो गया ओ भाई फाइनल The interlopers are no more. Now we may commit ourselves fully. It's working! We just need to keep this up!
ओ भाई Be careful now. सावन है The बच Guizhong Ballista is destroyed. Without its covering fire, retaliation shall be difficult. But the Jade Chamber is our last line of defense. We can't give another inch, no matter what. I have another idea. What do you mean, Lady Ningguang? I'll sacrifice the Jade Chamber. What is the meaning of this? I understand. Traveler, Oh, lend me a I- hand. Farewell, old friend. Goodbye for now. Let us meet again in the future. ओ भाई साहब Heart be pure, evil be erased. अच्छा आ गया स्पीचलेस क्या बोलूं मैं व्हाट एम आई सपोज्ड टू से Is it finally over? यस इट इज The ominous aura of that monster has indeed begun to fade. The effects of the Sigil of Permission last but a short time. It will be some time before the Overlord of the Vortex can make any waves again. We are indebted to you for your assistance. If the Adepti hadn't happened to be here, the future of Liyue Harbor would surely have been in great jeopardy. Save your flattery. We didn't just happen to be here. Surely you won't pretend to have forgotten the reason for which we came. Come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retainer. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had already started setting aside part of her then limited income in preparation for building the Jade Chamber. At first, it was only the size of a small room, but with continued expansion, it has become the palace that lies before you now. It is a testament to Ningguang's entire life, both as a businesswoman and as the backbone of the Liyue Qixing. Seeing the Jade Chamber destroyed in the defense of Liyue means much to her. To me, such cooperation and sacrifice deserves at least some recognition, don't you agree? Well, I was really hoping you would say that such sacrifice could at least be used as some leverage in our negotiations. Thank you all for hearing me out. We know very well why the Adepti came here today. But please forgive us. We cannot yield to your wishes. Oh? 3,700 years. According to our records, the Adepti signed a contract with Rex Lapis to protect Liyue 3,700 years ago. Even to this very day, Liyue and its lands have stood the test of time, immovable as stone, just as it was thousands of years before. thousands of years This before is truly no small feat. okay But that does not mean that the Liyue of today is the same city as it was all those years ago. Do not merely cast your protective gaze upon the land. Instead, focus your sights on our city and each of the citizens that dwell within it. Are you questioning our means of protecting Liyue? I mean no offense. I simply hope that our Adepti forebears would see Liyue in a new light. Forebearers, you say? One doubts you would be fit to be part of such a lineage. कैसे देखना सब लोग ने सर्कल करके खड़े देखना
यहाँ पर ये क्लाउड रिटर्नर है, ये बुड्ढी है, आई डोंट नो, मैंग टीपॉट आंटी, शाव अपने को मस्त पसंद है, अच्छा है शाव, पसंद है, मतलब ऐसा नहीं कि फेवरेट नहीं, पसंद अच्छा लगता है शाव। फिर अपना क्लाउड रिटर्नर मून का। This morning, Rex Lapis appeared to me in a dream. Okay. What? In the dream, I yearned to tell him that we Qixing, though mortal, are equally bound to the contract. Each passing generation of the Qixing leaves many things of value to be inherited by the next generation. I also thought to tell him how the past generations of Qixing had strove under his rule to survive in our mortal world, establishing a network of contracts which has since come to be known as trade. But I dared not speak. I could only gaze at him in silence until the moment I awoke. Oh, Ningguang. You're all in the same side. Yet another perspective. What are you trying to say, Outlander? When there isn't discord between Discord. Oh, when there is a discord between the guardians and those they were meant to defend. Harmony becomes very difficult to restore. Right! That's something that happened in Mondstadt. It's a story about the Four Winds and the people of the Animal Archon. The Animal Archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such conflict would only scar the hearts of both, and that nothing good would come of it. This is what we learn in the City of Rhythm. Each of the 7 nations has its own scars from the past. Though your point is the very height of simplicity. As Adepti, we've become a laughingstock, to be chastised thus by an outlander who has lent us such succor. All right, all right. Madam Didn't Pink, Ningguang okay. suggest that we should focus on the city and each of its citizens? I know I already have, so why not see for yourselves? I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show the proper courtesies. And who are you? And who are you? Arey bhai. I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I have come to extend my thanks to the Adepti. I thought this battle would perhaps be my last. But thanks to the aid of the Adepti, our forces were not as badly battered as I feared we might be. Although I am a mere mortal soldier, I promise to hold the line and never betray the grace given to us by the illuminated Adepti this day. Huh? Why does everyone look so down? Didn't we just beat that big monster? Weren't you frightened, dear? It was quite the predicament. I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there, and those powerful heroes with their visions were there. Everyone was there. When danger is near, everyone always protects me. And the rest of the time, they make fun toys and tasty snacks and loads of things that make the harbor so pretty. सब लोग उसके पास देख रहे हैं, निंगवांग अलग ही जगह देख रही है. Thanks for protecting Liyue Harbor. Please come visit us for the next lantern rite. Unfortunately, we wouldn't be able to participate. Huh? Because we are Adepti. Oh, okay. It must be hard being an Adeptus. Aww. You see, this is what Liyue is like today. The country of contracts is grateful to the Adepti for their protection. But it is no longer necessary for the city to rely on the Adepti's power to solve every little niggling matter. Although their blood is weak, there is still strength to be found in those we call mortals. The time of contracts between gods and Liyue has long since passed. Now is the time of contracts between Liyue and its people. Okay. Seeing the port around us now, it is hard not to feel a bit out of place. Wouldn't you say so, Cloud Retainer? Your line of inquiry is askew. One did not spearhead this expedition to Liyue Harbor.
Adepti have had a change of heart. They've listened to what the people have said. Let us return now. Let us return now. Eager to leave, conqueror of demons. Conqueror of demons, Shao, okay. Yes, one understands what the Conqueror of Demons means. The city of Liyue has changed much after our long separation. One fears that by the time one finally grasps the new contracts of Liyue, you humans would have once again changed the place beyond recognition. Fair enough. Away we shall, and return whence we came. Since we Adepti have consensus, then one shall persist no further. But how will we ensure that the Liyue Qixing will not simply exploit their power once we depart? In my view, that is still a thing to be guarded against. All right, Mooncarver, you needn't worry. It seems to me that this right of supervision is best left to the people of Liyue. Looks like the conflict between humans and Adepti was avoided. All's well that ends well, huh? You can say that. Oh, right! It's nice that we've got peace and all, but we're forgetting one thing. Child wanted to unleash the god so he could lure Rex Lapis out. But we were able to handle the Overlord of the Vortex on our own, so Rex Lapis never showed up. Oh, and speaking of that, don't we still need to get to the bottom of that Archon's death, too? Hyman doesn't get it. But isn't the strongest lead we have the Adepti-less rite of parting that we're organizing? No idea where Zhongli's gone. Let's ask for him at Wangshen Funeral Parlor. ओ भाई लुक फॉर जोंगली. जोंगली के लिए लुकिंग करेंगे अपन, लेकिन आज नहीं करेंगे. आज अपन चलते हैं. अरे यार इतना ऐसा क्यों करूँ मैं, ऐसे डायरेक्टली मॉन्स्टैड में चलो भाई. अरे थोड़ा सा और जूम इन करना पड़ेगा. अरे हो जाना. हाँ ठीक है ठीक है. चलो भाई साहब मजे आ गए आज तो. तो चलो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही. स्ट्रीम अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर अभी खेलना हो तो आ जाना, क्योंकि मुझे ये रेजन यूज करने हैं. ये जो रेजन यूज करने हैं तो खेलना हो तो आ जाना, अपन खेलेंगे. लेकिन मैं एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं खेल रहा हूँ तो आ जाना. थोड़ा ये ले लेते, एडवेंचर रैंक ले लेते हैं फटक से. 34 हो गया रे भाई, मजा आ गया. अब भाई नाइस नाइस नाइस. ठीक है ये एंड कर रहा हूँ मैं. स्कॉलर्स बुक मार्क, स्कॉलर्स बुक मार्क. तो चलो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही. स्ट्रीम अच्छी लगी तो लाइक कर देना. अपन मिलेंगे कल, और अभी खेलना हो तो आ जाना. मैं इस पे एंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं खेल रहा हूँ. ये खत्म करना है ना, कमीशन और ये सब करना है. कमीशन और ये सब करना है, तो खेलना हो तो आ जाना. मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा टाटा बाय बाय. जाओ मजे करो, गुड बाय टाटा. अरे ये एंडिंग, ये अरे मेरे बाल कैसे भी टेढ़े मेढ़े हो गए रे बाबा. ये क्या है, क्या है रे बोल टेढ़े मेढ़े बैग को करो के रखे ले रे. ओ ठीक है, सब लोग को गुड नाइट.